हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन कंप्लीट हो गया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, then the motion is called circular motion. A body revolves around a fixed point on the circular path, then the motion is called circular motion. The fixed point is called center of the circular path, circular motion, and the path is called circumference of the circle, and the distance between fixed point and the path is called radius of the circle. Angular displacement. When a body goes from A to B on the circular path and it makes an angle at the center is theta, this angle is called angular displacement. Angle AOB is equal to theta. It is called angular displacement. सर्कुलर मोशन में बॉडी एक साथ दो तरह की मोशन करती है। एक उसका एंगुलर मोशन होता है और साथ ही साथ लीनियर मोशन होता है। जब वो सर्कुलर पाथ पर, जब अपने सरकमफ्रेंस पर जब बॉडी मूव करती है, तो हम ये कहते हैं कि उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, वी कैन कंसीडर एज ए लीनियर मोशन। बट साथ ही साथ जब वो सरकमफ्रेंस पे मूव करती है तो सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करती है। जब वो पूरा सरकमफ्रेंस एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो सेंटर पे 360 डिग्री, इट मीन्स 2 पाई रेडियन एंगल बनाती है। तो जो एंगल सेंटर पे बनता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड जो पाथ कवर करती है, जो डिस्प्लेसमेंट उसका ऑन द वे होता है, जो पाथ पर होता है, सरकमफ्रेंस पर होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is radian. Now come to the definition of radian. What is radian? In circular motion, when body goes from A to B and length of the path is equal to its radius, it means radius of the circle. Length of arc AB equal to radius R. Then when we join the A and B with the point O, then angle is AOB and that angle will be equal to 1 radian. Then angle AOB will be equal to 1 radian, and symbol of radian is small c. Angle AOB is called angular displacement, and in this case this angular displacement will be equal to 1 radian. 1 radian को हम small c लगा करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। It is called 1 radian. How to define the radian? Definition of radian क्या बनेगी? Arc equal to the radius of the circle max an angle at the center will be equal to 1 radian.
मतलब रेडियस के बराबर कोई भी आर्क यदि हम सर्कल पर लें और उसके दोनों पॉइंट्स को सेंटर पर मिलाएं तो जो एंगल फॉर्म होता है विच इज इक्वल टू 1 रेडियन. इट मीन्स arc which is equal to the radius of the circle makes an angle at the center will be equal to 1 radian. How to convert radian into degree and degree into radian? To convert radian into degree, multiply by 180 upon pi, and here pi will be equal to 3.14. For example, 1 radian equal to 1 into 180 by pi, that is equal to 1 into 180 degree upon 3.14. 1 radian equal to 57.3 degree. Second example, pi radian equal to pi into 180 by pi, that is 180 degree. 2 pi radian, 2 pi into 180 by pi, that is 360 degree. To convert degree into radian, multiply by pi by 180. For example, 60 degree equal to 60 into pi by 180, that is pi by 3 radian. 180 degree equal to 180 into pi by 180, that is pi radian only. 360 degree equal to 360 into pi by 180, that is 2 pi radian. Relation between linear displacement and angular displacement. When a body goes from A to B, angle formed at the center is theta, and the distance of actual path covered is x. When we know that angle equal to arc upon radius, angle theta is equal to arc is AB, radius is r, the distance between O and A is r, and theta will be equal to x by r, and x is equal to r theta. X is linear displacement, so linear displacement will be equal to radius into angular displacement. Now next topic is angular velocity. Angular velocity, जैसे हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी. सेम एज हियर इन द सर्कुलर मोशन, rate of change of angular displacement or angular displacement, change in angular displacement per unit time is called angular velocity. The rate of change of angular displacement is called angular velocity, or
Angular displacement per unit time is called angular velocity. It is denoted by small w, that is called omega. The symbol is called omega. Omega is theta by t. Same as इसे लीनियर वेलोसिटी में हम बोलते हैं v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम x बाई टी. यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी. लीनियर वेलोसिटी v is equal to x by t. X is linear displacement and unit is meter per second. Same as angular velocity is angle by time theta by t and its unit radian per second. For complete revolution, for a complete angle theta will be equal to 2 pi radian and time t will be equal to capital T, that is time period. टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. किसी भी बॉडी के वन रिवोल्यूशन में जो टाइम कंज्यूम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एंड टोटल एंगल फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन. सो एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. फ्रीक्वेंसी, the number of revolution per second is called frequency. It is denoted by small n and its unit is hertz, revolution per second or hertz. The relation between time period and frequency is time period is reciprocal of frequency. It means t is equal to 1 by n or n is equal to 1 by t. So angular velocity can be represented by omega is equal to 2 pi by t and 1 by t is equal to n. So omega will be equal to 2 pi n. Unit of n is hertz equal to revolution per second. Our next topic is relation between angular velocity and linear velocity. Relation between velocity and linear velocity. In previous relation, we know that the linear displacement is equal to radius into angular displacement x is equal to r theta. यदि दोनों तरफ हम t से डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. x by t is equal to r theta by t and we know that x by t is linear velocity v and here r theta by t will be equal to omega and small v. Velocity, linear velocity will be equal to radius into angular velocity. V is equal to r omega. Linear velocity equal to radius into angular velocity. Now next topic is angular acceleration. The rate of change of angular velocity is called angular acceleration. It is denoted by alpha. Angular acceleration alpha equal to angular velocity upon time. Same as linear acceleration, a is equal to linear velocity upon time and unit is
meter per second square, same as the angular acceleration alpha is angular velocity upon time. Alpha is equal to omega by t, and its unit is radian per second square. The relation between angular acceleration and linear acceleration. Angular acceleration and linear acceleration. In previous relation, we know that the linear velocity v is equal to the radius into angular velocity. V is equal to r ओमेगा, दोनों साइड हम टाइम से डिवाइड कर दें तो v by t will be equal to r omega by t, and v by t is linear acceleration a is r, omega by t is alpha. So that linear acceleration equal to radius into angular acceleration. ऐसे यहाँ पर जो हम v और ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो हायर क्लासेस में इसकी जगह हम डेल्टा वी और डेल्टा ओमेगा का यूज करते हैं, पर एनटीएससी लेवल पे तुम्हारे हम इस रिलेशन से ही समझ सकते हैं कि v by t is linear acceleration and omega by t is angular acceleration, and relation between them is a is equal to r alpha. Here linear acceleration will be equal to radius into angular acceleration. इस पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे. A wheel of radius 0.5 meter revolve 30 times in 5 seconds. Find frequency, time period, angular velocity, linear velocity, and distance covered in 10 seconds. The solution is frequency n is number of revolution per second. So there are 30 revolution in 5 seconds. N will be 30 by 5. Frequency is 6 Hz. Time period t is equal to 1 by n, that is equal to 1 by 6 seconds. Angular velocity omega is 2 pi n, that is 2 pi, n is 6, 12 radian per second, 12 pi radian. And fourth is linear velocity, v is equal to r omega, r is 0.5, omega is 12 pi. So linear velocity v will be 6 pi meter per second. यदि रिक्वायरमेंट हो तो हम पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं. यदि हमको जैसे एनटीएससी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि पाई की वैल्यू 3.4 मल्टीप्लाई करने से आंसर आए, तो हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ऐसे दिक्कत. फिफ्थ इज डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड. और डिस्टेंस s will be v into t, there is no any acceleration, so distance will be the product of velocity and time. T is 6 pi and 10 second, that is 60 pi meter.